Bismillahirrahmanirrahim. So now we are discussing the return of the native and MCQs. Thomas Hardy was born in 1840 and died in 1928. Hardy's novels include fatalism. So determinism है, fatalism है. This means कि उसके novels के अंदर ये approach है कि all is preordained and people suffer due to what is written in their fate, and all that is happening is because of chance and coincidence, and man is like a puppet in the hand of God. So वो बहुत सारी miseries जो fate के जरिए पैदा होती हैं, they are discussed in a majority of our novels. Thomas Hardy's novels are also called Wessex novel. So remember, Wessex is the place where in the later Anglo-Saxon age a government was established by Anglo-Saxons. The action of the novel takes place in which area of England? So it is Wessex. What is the name of Mrs. Yearbright's house? So Mrs. Yearbright is an important character of the novel, and Bloom's End is the name of her house. Mrs. Yearbright is mother of Clyne Yearbright. Clyne Yearbright जो कि एक central character है, उसकी माँ है Mrs. Yearbright. Clyne just returned from France, and novel is named after him, The Return of the Native. So he was the native of that Wessex area, and he was France, and then he returns. So France से वापस आता है. Apart from the people, Heath is also a major character of the novel. So Heath वो area, वो एक proper surrounding, एक एक्टर का रोल प्ले करती है, एक कैरेक्टर का रोल प्ले करती है इस नॉवल के अंदर. इसके नॉवल के टर्न्स और ट्विस्ट्स में और डेथ्स के अंदर इसका रोल है. What was Clyne's occupation in Paris? So then in Paris he was a diamond merchant. लेकिन उससे छोड़ देता है, since he wants to be a teacher, तो वो वापस आता है अपने गांव को सर्व करने के लिए, टीचर बनने के लिए. Diggory Van. So Diggory Van is the carriage owner जो कि एक carriage चलाता है. He selflessly protects Thomasian, another important character, throughout the novel, despite the fact that she refused to marry him 2 years before. So thoroughly वो उससे loyal रहता है, उसके करीब रहता है. Damon Wildeve. So Damon Wildeve was Eustasia's former lover and Thomasian's first husband, जो कि उसको discard कर देता है, छोड़ देता है. तो Wildeve जो है, he's kind of a lusty person, जिसके लिए emotions से ज़्यादा like materialistic चीजें. Riddle is a dye used for marking sheep. तो चूंकि गांव का एक environment है, तो sheep को mark करने के लिए riddle is used. Another person who is servant, he falls in love with Eustacia as well. So his name is Charlie. Barrow is basically primitive burial mound. एक बहुत ऊंची सी घाटी होती है जिसके बारे में primitive thoughts होती हैं कि यहाँ पे दफन किया जाता था लोगों को. ये वही माउंड है जिसके ऊपर यूस्टेजिया अक्सर जाती है, और इधर ही एडम इन द ये क्लाइम इन द एंड घूमता रहता है. What title does Hardy give Eustacia? Queen of Night. So he calls her Queen of Night because she has more advancements at the time of night in the novel. Mrs. Yearbright is not like Eustacia because of a natural women's institution tells her not to like the girl. कि जो औरत के अंदर एक कुदरती एक फीलिंग आती है, इंट्यूशन आती है, उस वजह से she has some reservances towards Eustacia, and she does not want her to be her daughter-in-law. Eustacia's greatest dream is to move to Paris. So she wants to be Clyne's wife,
कि ये पेरिस से आए और बाद में इसको साथ ले जाएगा, एंड शी इज like discouraged when she knows कि ये यहाँ पे for good he has settled. Waldev reappears and he has unexpectedly inherited a large sum of money. तो अचानक उसको इनहेरिटेंस में बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, एंड दिस अगेन ड्रॉज Eustacia towards Waldev. Klein married Eustacia without his mother's consent. लेकिन उस टाइम पे when Eustacia was sure कि Klein will take her to Paris. Afterwards they have domestic issues and both husband and wife they start living away from Klein's mother, यानी मिसेस योब्राइट से दूर रहना शुरू हो जाते हैं. Eustacia remains disloyal to her husband. कि even after marriage, when she knows कि उसकी wishes fulfill नहीं हुई, and seeing Baldev के he has got enough money, so she is now more prone towards Baldev. For Eustacia, money matters, not the emotions. Who comes at her house, like at Eustacia's house, when she has her lover inside? So Klein that time was sleeping when Eustacia brought her lover, or her lover came to meet her, and she brought Valdev inside. Meanwhile, Geobride, who was not visiting them quite often, or they were not on speaking terms, उसको लगा कि मुझे जाना चाहिए, अपने बेटे से मिलना चाहिए. So वो जाती है, उसको दरवाजे को नॉक करती है for a courtesy call. So she's not feeling well, health issues हैं उसके. So और Eustacia को ये है कि मैं पकड़ी ना जाऊं. So she does not open the door. होता क्या है कि heartbroken Mrs. Geobride goes back home. Meanwhile, when she's going back home, a poisonous snake bites her, and she is dead. Valdev visits her again on Dash and offers to help her get to Paris. So this is Guy Fawkes night, जिस पे वो उसके दोबारा करीब आता है और उसको पेरिस ले जाने की एक ख्वाब दिखाता है. गॉय फॉक्स नाइट. गॉय फॉक कौन था? ये जो मास्क आपके सामने है, दिस इज अ वेरी फेमस मास्क एंड इट इज नोन आफ्टर दैट पर्सन. ये बंदा था जो कि एक रेडिकल पार्टी में था और ही हैड अ फेल्ड लाइक स्कीम, जिसमें इसने लंदन की जो ट्रेन स्टेशंस के अंदर जाके जो पार्लियामेंट हाउस और वो जो सारी बिल्डिंग्स रिवर टेम्स के किनारे बनी है, उनको एक बारूद से भरी हुई ट्रेन से उड़ाना था कि नीचे से एक्सप्लोजन होता और ऊपर से हर चीज उड़ जाती. सो ही वाज ऑलमोस्ट डूइंग इट व्हेन इट फेल्ड. तो ये एक इसकी मूवी भी है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन हिस्ट्री. इसकी नाइट को मनाया जाता है ताकि यानी उस पर ये पटाखे वगैरह छोड़े जाते हैं. सो इस रात को वाल्डेव अगेन मिलता है यूस्टेशिया को. What sign does Eustacia use to indicate Damon Waldev that she wants to see him? अब इससे पहले वाला ये हम देख लेते हैं. Eustacia realizes that if she lets Waldev help her, she'll be obliged to become his mistress. कि अगर वो उसकी बात मान लेती है और उसके फ्रांस जाती है उसके साथ, तो वो उसको उसकी मिस्ट्रेस बनेगी. He can do anything with her. तो वो कहती है मुझे सोचने का टाइम चाहिए, और फिर वो बताती है कि मैं तुम्हें सिग्नल दूंगी इफ आई एम देयर विद अ यस. सो शी लाइट्स अ bonfire, which is a sign कि she agrees on Valdev terms. और आफ्टरवर्ड्स ये फिर मिलते हैं उसके घर में भी, जहाँ पे मिसेस जियोब्राइट आती है. How does Valdev die? He drowns and Eustacia commits suicide. What misfortune prevents Klein from pursuing his studies and becoming a school teacher? So he damages his eyesight and to some extent he is blind. तो एक preacher बन जाता है, एक mobile preacher, he is moving, wandering preacher kind of. तो वो उसी बैरो के ऊपर, उसी माउंट के ऊपर आसपास preaching करता रहता है because he cannot study anymore. So this was from Hardy's Return of the Native.